Hello and welcome to Behind the Stumps with Surinder Khanna, and we are talking about Oval Test. Before this test match starts, we were thinking India can make the history. But if India win this test match, it will be a big achievement, according to Indian viewers. जी हाँ, ये कुछ हो रहा है इस वक्त ओवल टेस्ट में और हमारे साथ सुरेंद्र खन्ना जी मौजूद हैं। खन्ना जी क्या कहेंगे, कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई जिसका इम्कान बड़ा कम था। करुण नायर टीम में है, उन्होंने जिस अंदाज की बैटिंग की, बड़ी मुनासिब बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर पंत इंजर्ड हो गए तो उनके मुतबादिल के तौर पर जो है जुरल विकेट कीपिंग कर रहे हैं। बात वही हो रही है, जुरल जो है उस पाई की बैटिंग नहीं करते हैं। व्हाई नॉट सरफराज जो इतने फिट हैं, उनकी तस्वीर भी वायरल हुई और हम देख रहे हैं बुमराह की वापस से बातें होने लगी। अगर बुमराह अपने को इतना फिट समझते नहीं है तो ही मस्ट टेक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। Hello, Tavish. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. To all our viewers who will be listening to us after the program. Tavish, when you have a lot of injuries, long tour, or pehle char test match, we give credit to both the teams that the matches lasted till the fifth day. And there was a lot of cricket, a lot of bowling, a lot of batting, fielding, and they're not used to, in fact. आजकल ਜਿਹੜੇ प्लेयर्स ने वो ज़्यादा वो T20 ज़्यादा खेलते हैं and because of that when you play so much of test match cricket suddenly you have to bowl 20 overs if you are a bowler, 25 overs a day, 90 overs fielding. Then in England, temperatures keep changing, so you have to keep your body warm when you are on the ground. There are a lot of factors, and then the mindset and the body gets used to T20 or one day cricket, whichever you are playing more. तो दोनों टीमों में असर जो है इंजरीज का, और वो लग रहा है हम किसी को पॉइंट आउट करें एक खिलाड़ी को, वो अच्छी बात नहीं है। बुमराह का जहां तक सवाल है, उसको वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो काफी देर से वो लगे हुए हैं उसके ऊपर, बिकॉज ही इज बीन इंजरी प्रोन इन द लास्ट 2-3 years. तो जितना भी हम उससे बेस्ट ले सकें, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स. दैट इज व्हाट द टीम इंडिया एंड द बीसीसीआई फील्स अबाउट हिम. As regarding the test match, yes, if India wins, we'll level the series. It will be a great thing. I remember I was on the tour. This is the ground where Sunny Bhai Sunil Gavaskar scored 220 against England in 79. And I was in the squad, though I was not playing in the 11. I was sitting out. I watched every ball and every run which Sunny scored against them. And we drew the match. We came very close. We needed about 14, 15 runs in the last over, or 12 or 13 runs. And we drew the match, with 1 wicket to go or something like that. Oval normally has more bounce. But this time, I saw more movement, more grass on the wicket. I don't know. Curators are independent. And from England side also, they were missing a few bowlers. But Atkinson, who came back, looked the best. Karun Nair, like you said, he batted well. He looked good, but I always said he's not number 3. So he batted number 5 and he got very good 50 when India needed. His experience came in. And let's hope that India puts decent score on the board. England will also struggle. Whatever India has the bowling in their armory to throw at the English batsmen, because Stokes in the middle order will be missed. They're already missing a captain, the fine all-rounder who made an impact from England side in this series so far. Best player Root, उनका batsman लगा लो, और Stokes जो है, so Root is there, but Stokes they are missing. I feel if he was there on this kind of a wicket, he would have made a difference. India again didn't play Kuldeep Yadav, which many of us feel that when you are playing overseas, you either have a right arm leg spinner or a left arm Chinaman Googly, and he's capable of picking up wickets. And in test matches, you play bowlers who pick up wickets quickly, 20 wickets. That's how you win the test match, Yeah. Before the start of this test match, Khanna ji, we were thinking India can make history in English conditions against English team. But now if we talk about Shubman Gill,
he made a history, he made a record. And you were talking about Sunil Gavaskar, 1978, 1979, England against England. Sunil Gavaskar was very fine. But if we will talk about Sunil Gavaskar against West Indies in 1978, he scored 74. 732 runs. Yes, in 74, he scored 732 runs. But now the Gavaskar record is being broken by Shubman Gill. So, how will you think his batting style, his aggression as a captain, how impressive he is for the Indian team? I think leading from the front and getting 400s after, I think, Donald Bradman as captain and Sunil Gavaskar. He is the one to do over 700 runs, 400s in England, which, his record in the last tour was dismal. And there were a lot Hmm. of questions mark against him before the Hmm. tour that he has become the captain who hasn't had a great average. So I think he Yeah. has silenced everybody, one, and the kind of style he has. He's not like Pant, who is a blaster, an animal. He comes on the scene and takes the bowling apart, like Ian Botham of England, you know. So Like Fakhar Zaman Gill, of Gill Pakistan. is suave. Gill is like a Mercedes which, goes about the job without making any noise. So Hmm. I'm very happy because I backed him. Even for captaincy, I was backing him, because he has temperament, he is cool, and these are the hallmark of Hmm. a good player who is cool. He takes better decisions. And in batting, you need to be very, very cool. In cricket or in sports, let your Hmm. performance do the talking. And I think Gill is outstanding. We are proud of him. The entire cricket fraternity. I was reading English ex-English captain Michael Vaughan, Nasir Hussain, and many others who have really praised him a lot. David Carr, he says on one side I see Pant coming into bat, on the other end is Shubman Gill, like it was Jeffrey Boycott and David Carr, you know, batting for England. Jeffrey was a run accumulator and David Garr was a stroke player. Both of them ended up scoring 8,000, more than 8,000 runs. So you have your style, how effective you are. That is what matters. And as a captain, when you score, you can demand performance, command the team, and lead from the front. I think it's a great sign for Indian cricket to have a young lad who has very good shoulders on his body and should lead the team well. Well, we are getting that Shubman Gill is just not getting well positive views from the Indian side, but even from the international cricket fraternity. Sir, I just want to know about you. What will your views regarding the team selection of Indian team before any test match? There are many reservations, not taken by the media, but it is by the cricket fans also, and same scenarios take place again. Boy from Karnataka, Krishna, is a part of Indian team on Oval Test. But now the cricket fans are talking about why not Anush Kambosh, who was a part of your fourth test against England in Lords, why he is not part of it in the fifth test in Oval. I think, like I said earlier, that Yeah. how many people are fully fit? Because these days, nobody says that he is injured because then you'll have to go back, go to Bangalore and sit in NCA and recover. So they all are having some niggle or the other. Like I said, it's a grueling tour, 4 test Yeah. matches which have gone the distance. Normally in England, we see a lot of rain, like it is back to typical English weather at the Oval. There was rain Hmm. before the match. In between the match, only 60 odd overs could be played. So that shows that we are now having the English summer, the English weather. So those could be the factors. And then coach and captain, they feel which is the best team looking at the wicket. We have our view sitting in Delhi or you in Karachi or many people. But there are certain technicalities like about Kuldeep Yadav, I said. Kuldeep should have been played, and they are playing the bowlers who were picked as bowlers, seam bowlers. Prasid, if Hmm. he became fit, they have brought him.
because he was picked as a fast bowler ahead of many others. So you have to continue and give that confidence to them, and I hope they deliver. They have got a greenish wicket where the ball is seaming, where the ball is moving, and it is making life difficult for the batsman. You know. बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। लेकिन जाते-जाते आखिरी और बड़ा अहम सवाल खन्ना जी के साथ इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन. It is get not only rising in India, but it is taking place in Pakistan, even in world cricket. कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? क्योंकि ये जो बड़ा सवाल है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग के बाद से वापस से उठने लगा है, जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ पहले राउंड मुकाबले में खेलने से साफ इनकार कर दिया और फिर वॉकआउट कर गए सेमीफाइनल से। तो ये जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, इस सारे सिनेरियो में इंडिया में जो लोग मौजूद हैं, उनके क्या व्यूज हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान रहा, इसके बाद क्या अब ये फैसला कर दिया है इस वक्त की हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि पाकिस्तान के साथ ना तो तिजारत होगी, ना उनसे कोई बात की जाएगी और ना ही क्रिकेट खेली जाएगी? तो एशिया कप उससे कितना अफेक्टेड होगा? दुनिया क्रिकेट तो यकीनी तौर पर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती है तो उससे अफेक्टेड होती है, लेकिन क्या ये अब कितना अफेक्टेड होगा? ये एक अहम सवाल है। क्या कहेंगे खन्ना जी, योर व्यूज ऑन इट? Tabish, it is debated in the parliament also. Let me tell you, in India, मैं और आप बहुत छोटे लेवल पे हैं. एज अ क्रिकेटर आई फील स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम द मेजॉरिटी व्यू इंक्लूडिंग मी इज कि बॉर्डर पे भी शांति होनी बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच में. बिल्कुल, बेशक. It's high time that good sense prevails. Losing innocent lives for the last 40-50 years have not yielded any good results. कि हम इधर तो दोस्ती अपना भाईचारा चलता रहे और उधर गोलियां चलती रहे, हमारे दोनों तरफ के जवान मरते रहे, इनोसेंट जवान. So personally speaking, I want cricket to happen, but at the other side, terror also can't go, you know, and we can't shift the blames and go on. और मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगता है. और मेरे वालिद साहब लाहौर से थे, हमने उनसे सारी लाहौर की बातें, वो वहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी अच्छी खासी जिंदगी वहाँ जी थी जब पार्टीशन हुआ और यहाँ आए थे. तो मेरे विचार और मेरी फीलिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट आई एम विद द मेजॉरिटी व्यू कि इस पे कुछ ना कुछ विराम लगना चाहिए एंड वी शुड नॉट बी. दूसरा क्या हुआ कि जो पिछला टूर्नामेंट जब पाकिस्तान को अलॉट हुआ चैंपियंस ट्रॉफी, उस समय जो आईसीसी इवेंट है वो तो हर टीम को खेलना पड़ेगा. अगर आप नहीं खेलोगे तो आप जो है वो खेल से बाहर हो जाओगे, क्योंकि खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. तो उसी टाइम इन्होंने जब दुबई में, यूएई में ये जो फॉर्मूला निकाला कि जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट होगा वहां पे हम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू में खेल लेंगे, तो उसके तहत एशिया कप जो अनाउंस हुआ, इन्होंने जो है, बिकॉज दोनों ने वहां पे वो साइन किया हुआ, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने, तो वहां पे एशिया कप में इन्होंने कहा हम खेलेंगे. वहां पे इंग्लैंड में जो हमारे वो WCL हो रही थी उसके अंदर उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी. शिखर धवन ने शायद ट्वीट कर दिया कि भाई मैं तो नहीं खेलूंगा. ट्वीट, अगर नहीं खेलना तो ना खेल, बाकियों को खेलने दे, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो खेले थे. इंडिया और पाकिस्तान का शायद फाइनल हुआ था, तो इस बार सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने थे. और मेरे ख्याल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको उसने एश्योरेंस दी थी कि कोई ऐसी कोई वहां पे हरकत इंग्लैंड में क्यों होगी. इट्स अ न्यूट्रल कंट्री एंड पीपल लिव इन पीस ओवर देयर एंड दे एंजॉय देयर क्रिकेट. लेकिन बहरहाल जो खबर आई कि उनको क्लैरिटी नहीं थी, तो बाकी खिलाड़ियों ने कहा कि अब शिखर धवन तो जो है वो देशभक्त बन गया, हम खेलेंगे तो लगेगा कि हम पैसों के लिए खेल रहे हैं, जबकि ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स की क्रिकेट में उतने पैसे नहीं होते एज कंपेयर टू व्हेन दे प्ले एक्टिवली फॉर द बीसीसीआई एंड फॉर एनी क्रिकेट बोर्ड. तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यार इसने ट्वीट कर दिया, अगर ये ट्वीट नहीं करता, चुपचाप ना खेलता, तो वो खेल लेते, चुपचाप मैच हो जाता, कोई ऐसी वो नहीं होती. क्योंकि एशिया कप फिक्सचर अनाउंस हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे. तो मुझे लगता है कि इसमें क्लैरिटी जाने से पहले, क्योंकि खिलाड़ियों को जो है सरकार का जो व्यू होता है उसको अबाइड करना होता है. वी लिव इन अ कंट्री वेयर यू हैव टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. इसी के साथ साथ इख्तिताम करते हैं, इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार. सत श्री अकाल, नमस्कार, अल्लाह हाफिज.